and now it's fourth year in a row, successfully reaching out to 8 lakh participants in Veer Gata 1.0 to 1.37 crore students in 2022-23. And this year, Veer Gata 4.0, we are looking forward to increasing participation. I'm going to share that each district is a star with 2,36,276 participations in poems, essays, paintings, and multimedia presentations to honor our gallant heroes. Through Project Veer Gatha, we are not only inspiring patriotism in our youth, but also nurturing responsible citizens for the future. Today, in the honor of our gallantry heroes, we have invited Shaurya Chakra Awardee Commodore Varun Singh to interact with the students of Delhi who are desperate to interact. So, are you interested to know more about our hero? Okay. So, let's watch a video. The respected box of Indian trade cards, Catherine Manoj Pandey is one of those who shine light. Wow. So you see how students have participated in Veer Gatha project, and many of you have also participated in this. Now we will show you a video about our guest, eminent guest, Shaurya Chakra Awardee, Commodore Varun Singh. Captain Varun Singh is a warrior of the sea, a native hero who fought death. In 2000, when the captain was posted at the Bala Lake in Kashmir, he fought terrorists despite great danger to his life. A bullet fired by the enemy tore his chest open, leaving shrapnel lodged inside his heart. The doctors said it would be nothing short of a miracle if the captain survived. But he fought back hard, reclaiming his life from the clutches of death. A recipient of the Shaurya Chakra, Captain Singh is an embodiment of courage and valor. I was waiting. When I got my Shaurya Chakra also, and with a bullet injury, was in hospital for almost 2 years. After recovery, I was appointed as staff officer for setting up a special force training school, and thereafter, I will challenging jobs of commanding individual ships market, Krishna, Sharda, and also fell on my lap. After commanding several warships like INS Karna and INS Steer, he now trains the ferocious commandos of the Navy.
Captain Singh believes that while there may be times when life will rock one's boat, an unflinchingly positive attitude will help them stay afloat. Maybe the movie says, in friendship, challenges are yellow, as yellow, we have to be active. This is the naval hero's message for the young minds of today. Dream hard and work harder. I believe big time dreams. और जैसा कहते हैं अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मुकम्मल करने में लग जाती है तो ड्रीम बिग वर्क हार्ड फॉर इट एंड बी डेडिकेटेड what a man would it be then? Isn't it wow? Braving the waves and stormy night, naval officers guard with all their might. Anchored in courage, fearless and true, they sail for the flag, the white and the blue. I'm sure your mind is flooded with questions to know more about the journey of Commodore Varun Singh. I invite Commodore Varun Singh to interact with our students and satiate their curiosity. You must be having questions. Please note down your questions and you can ask and learn about more about sir. Yeah, please. No, we don't. Caller mic we don't have. ये तो दे सब चुने आ रहे हैं नहीं कुछ just share with the how's the George? इसको मैसेज को कॉपी करो यूट्यूब में कौन सी चलो जैसे पहले Okay, so only from the girls. I have to prove a point which I'll tell later, but only from the girls. How's the George? Hi, sir. From the boys. How's the George? Hi, sir. But the numbers are more, I think so. But I'll tell you, अगर बाद में आप पूछोगे, I think my personal experience. So my personal experience, girls are more stronger than boys. All the girls, yes or no? Yes. Still आवाज नहीं आ रही. Yes. थोड़ा सा और जोश. Yes. I'll prove it later if the equation has to be proven. Otherwise, for me, from my 53 years of experience, I can still vouch and stand by my statement that girls are more stronger than boys. Okay, so that is just the statement part of it. Before we move on to interactions or probably questions from your end, let me ask you, how many of you know what uniform I'm wearing? It belongs to which service? Army, Navy, or Air Force? I think so you have guessed Navy. From how? From? Okay, great. So you saw me on the ships, probably commanding ships, that is naval charter, and that was one of the guess. But I wore camouflage today with a purpose, and purpose was very simple, to let you know the importance of dream. As I told you in that also, मैं अपने 3 मुख्य सपनों से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा और ये सपने किस तरह से वास्तविकता में बदलते हैं, कैसे आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों के साथ साझा करो. That is all my purpose is with you, and that is why when parents tell you, when आपके गुरु आप लोगों को कहते हैं प्लीज थिंक बिग, प्लीज थिंक पॉजिटिव, इट हैज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपके शरीर में हैं, एवरी सेल स्टार्ट्स रेजोनेटिंग विद योर थॉट. टाइम फ्रेम इज नॉट विद अस कि आज होगा या कल होगा. हमारी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता है. हम अक्सर इतना ज्यादा सोचते हैं हर चीज आज ही चाहिए, और उस आज की चाहत में, अभी की चाहत में
वी स्टार्ट गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जैसा मैंने सोचा है. बट मुख्य रूप से इफ यू कीप द टाइम कैनवस विच इज नॉट इन आवर हैंड, आप जो सोचोगे या हम जो सोचते हैं अक्सर कंप्लीट होता है. सो इसलिए रिक्वेस्ट नंबर 1, प्लीज थिंक पॉजिटिव, प्लीज थिंक बिग. एंड उसके बाद आपको यू हैव टू वॉक द टॉक. केवल बात करने से नहीं, उन्हीं बातों पे अमल अगर हम करना शुरू करेंगे तो बातें सच्ची भी होती. मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी के फलस्वरूप जो मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं. तो जब मैं क्लास 7th 8th 9th इन्हीं क्लासों में था, आप लोगों से भी जूनियर, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक किताब देखी थी मैंने. कुछ समझ में नहीं आता था. आई एम वेरी श्योर उस क्लास में अगर आपने भी केमिस्ट्री या बायो के बारे में पढ़ने की कोशिश की होती, सब ऊपर से निकल जाता है. एंड वही हुआ. बट एक तमन्ना सी जागी थी दिल में कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना. एक सपना बनता चला गया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए मुझे फौज ज्वाइन करना है. फौज ज्वाइन करने के बाद मुझे कैमोफ्लाज ड्रेस पहनना है. एंड कैमोफ्लाज ड्रेस बन के, कैमोफ्लाज केवल कमांडोज पहनते थे, तो कमांडो बनने के पश्चात मुझे टेररिस्ट को मारना है. बच्चों की लगभग मोटे तौर पे इतनी ही समझ के हिसाब से इतनी सी ही सोच और इतने ही सपने में बुन पाया था. किस्मत देखिए, अगेन आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता भी चला जाता है. 6th के बाद भूल भी गए. किताबों से एक दो क्वेश्चन पढ़ने की और रटने की कोशिश की थी, वो भी भूल गए. कम 10th 11th 12th फिर एक बार जिज्ञासा जागी. 88 में एक टीवी सीरियल भी आता था, उसको देख के एक बार फिर से वो लॉ जगी दिल में कि मुझे भी फौज ज्वाइन करना है. और 90s तक ये ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे. जैसे आजकल आपके कैरियर टॉक्स होती हैं, काउंसलिंग होती है, आप इस विषय से लेके आप ये जॉब कर सकते हो. हमारे टाइम में केवल 3 या 4 मुख्यतः होते थे. आप या तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फौज में ज्वाइन करोगे, या सरकारी किसी महकमे में लग जाओगे. तो विद सो मेनी लिमिटेड ऑप्शंस, इंडिया सच अ ड्रीम प्रोजेक्ट एक्चुअली विच वाज गोइंग ऑन इन अ माइंड. एंड किस्मत ऐसी थी, 12th में एग्जाम दिया, एनडीए पास हो गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच गए. पर उसके पश्चात तो देखिए, ड्रीम नंबर 1, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू फौज ज्वाइन किया. पिताजी नेवी में थे, बोले कि आर्मी नहीं तुम नेवी में आओ. बट मुझे आर्मी ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे कैमोफ्लाज ड्रेस पहनना था, मुझे कमांडो बनना था. बट पिताजी की आज्ञा थी, उसको हमने तामील किया. आई चेंज माई सर्विस फ्रॉम आर्मी टू नेवी. बट किस्मत अगेन, नेवी में बाय दैट टाइम वी हैड मरीन कमांडोज स्टार्टेड. तो मरीन कमांडोज was the batch which started, and I could join that after a lot of struggle. So second wish also comes true. I become a Marine Commando, and I am posted to Jammu and Kashmir in one of the terrorist infested areas. बट इन सपने के बीच में अब देखिए, सपने लगभग पूरे 3 जो मुख्य सपने थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू फौज ज्वाइन करना वो भी हो गया, कमांडो बन के कैमोफ्लाज ड्रेस पहनना वो भी हो गया. अब देखो कैसे किस्मत आगे लेके जा रही है, कश्मीर हम पहुंच गए. 1 महीने पहले लगभग 2000 में जो ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा होकर वीर गाथा में आप लोगों को इंटरेक्ट करने की प्रयास कर रहा हूँ. सो मई 2000 में ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऑपरेशन आया. बट उससे 1 महीने पहले कुछ इंट्यूशन सा मुझे होने लगा. एवरी नाइट आई यूज्ड टू स्लीप एंड वेक अप विद अ थॉट, और रादर अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, कि मैं एक ऑपरेशन में हूँ, टेररिस्ट के बीच में हूँ, मैंने कुछ टेररिस्ट को मारा है. बट उसके आगे अब मैं ऑलमाइटी से इंटरेक्ट कर रहा हूं कि ठीक है, मैंने 2 को मारा, मेरी सारी सपने मेरे पूरे हो गए. बट उन्होंने बोला कि बॉस तुम 2 जिंदगी ले रहे हो या 3 जिंदगी ले रहे हो, उसके एवज में तुम्हें भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा. तो आई एम सेटलिंग विद हिम सेइंग दैट ओके ठीक है, अगर मुझे रिवर्स में गोली लगनी है, रिटर्न में लगनी है, तो सर में नहीं लगना चाहिए, पैर में नहीं लगना चाहिए, पीठ में नहीं लगना चाहिए, आप मेरा हाथ ले लो. So this was a dream, and I used to wake up with this half-finished dream every morning, a month before this actually incident happened. And again, as destiny, it came through within a month. I am engaged in an operation. I killed 2 terrorists. It's a teamwork. When I say I, everything milake. But finally, I was face to face with 2 terrorists, and it was just like the first row and me. I shot. दोनों गिरे.
बट गिरते हुए उनकी गोली आके मेरे ग्रेनेड में लगी, दैट स्प्लिंटर्ड ऑफ, लगभग 70-80 स्प्लिंटर मेरे राइट चेस्ट को चीरते हुए थ्रू एंड थ्रू तो नहीं निकल पाए, बट एवरीथिंग गॉट एम्बेडेड इन दी बॉडी इटसेल्फ। मेरा दाहिना हाथ मुझसे लगभग 1 मीटर दूर पड़ा था। सो व्हाट आई रिकलेक्ट वाज आई वाज अनकॉन्शियस द मोमेंट आई गॉट हिट, इट वाज टोटली अनकॉन्शियस। जब मुझे होश आया तो सिखलाई के स्वरूप, ट्रेनिंग के स्वरूप आपको क्यों प्रैक्टिस दिया जाता है कि राइट अ सम 10 टाइम्स, या फॉर्मुलोस को आप 10 बार 20 बार पढ़ो। उसका एक महत्व है कि अगर आप सोते हुए भी आपसे कोई पूछ ले तो आप उसका जवाब दे सको। उसी प्रकार फौज की सिखलाई होती है, एक ही चीज को इतनी बार करा दिया जाता है कि अगर आपको सोते सोते भी उठा दिया जाए आप वो पूरी ड्रिल कर जाओगे विदाउट इवन वेकिंग अप। There have been instances when people were in coma but still managed to do without knowing what they were doing. That is the importance of training. तो अगर आपको एक चीज बार बार बताई जाती है, कही जाती है या प्रैक्टिस कराई जाती है, उसका मकसद होता है। वो आज शायद हमें ना समझ में आए, बट कहीं ना कहीं उसका you so much. Doctor said, please don't take me because I had given up. Something brought me back, which made me operate you. And if you're alive, though I am a conduit, I am a messenger, I did the operation. Something was actually making me do what I did. So coming back to dreams, एनडीए के थ्रू फौज, कमांडो, एंड विद इन कमांडो बनने के पश्चात किलिंग टेररिस्ट system, because finally you have taken lives of 2 individuals or more. So that is my take, but आप लोग शायद ये पूछ सकते हो, but that was your duty. अगर उसको नहीं मारते तो वो आपको मारता. But in the external cosmic अगर सोच अगर आप सोचोगे फाइनली 2 जान गई हैं तो उसका भरपाई करना होगा. But that is different part of it. So again coming back to the point, please dream big.
इट्स गॉट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, आप लोग भी सोचते होगे। और इसी में, इसके पश्चात अगेन एक थॉट आया दिमाग में कि क्योंकि मैंने 2 जाने ली हैं, तो इसके एवज में मुझे 200 जाने बचानी है, जस्ट टू कंपनसेट। एक और सपना है, एंड दिस इज 2018 में आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई एम ऑन बोर्ड अ शिप, वी वर गोइंग टू साउथ अफ्रीका ऑन अ शिप, एंड वहां से शिप वाज डाइवर्टेड टू मोजाम्बिक, जहां पे एक साइक्लोन आया था 3 दिन पहले, एंड काफी तबाही मचा के चला गया था। एंड किस्मत ऐसी थी, उस ऑपरेशन में 203 जाने बचाई। तो बड़ा कोइंसिडेंस सा लगता है, एक डर सा पैदा हो गया था, क्योंकि 2018 में मुझे कैंसर हुआ, और उस कैंसर में लोग कहते हैं कैंसर का एक और कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी आयरन मटेरियल्स इन द बॉडी प्रोड्यूस, जिसकी वजह से किडनी कैंसर लाजमी है, इट इज वेरी नेचुरल। सो उस कैंसर के दरमियान एक बकेट लिस्ट मैंने तैयार की थी। व्हाट इज मोर फियरफुल, अ कैंसर न्यूज और अ बुलेट इंजरी? ऑल एग्री विद मी? कैंसर, कैंसर इतना भयंकर रोग नहीं है, आप किस स्टेज में उसको पकड़ पाते हैं, बट जो डर वो पैदा करता है दैट इज मोर फियरफुल। इंसान कैंसर से नहीं मरता है, कैंसर के डर से मरता है। तो ये अगर हम जान सके, और डर के आगे जीत है, अगर आप उस जीत को हासिल कर सको, उस डर को हरा सको, ये आपके ऊपर, चॉइस आपके ऊपर। आपको मुस्कुराना है या किसी भी इंसिडेंट के लिए सैड होना है। नो एक्टिविटी इज यूनिवर्सल। अगर कोई गतिविधि होती है, उसका आउटपुट या उसका रिएक्शन विल बी डिफरेंट फॉर यू, डिफरेंट फॉर यू। इस रूम में अगर सांप आता है, सबका रिएक्शन अलग होगा। कोई इसको देख के सराहेगा, कोई भागेगा, कोई चिल्लाएगा, एंड वेरियस अदर एक्टिविटी। बट सबके मस्तिष्क में, सबके दिमाग में एक डिफरेंट एक्टिविटी चल रही होती। स्टिमुलस एक है, but your reactions are always different, which means the power is in your mind, which means आपका thought is so important. That is what you have to build up. उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, उसको आपको स्ट्रांग बनाना है। इसलिए अगर बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इट इज गॉट मीनिंग। इट रिवर्बरेट्स द एंटायर सेट ऑफ बॉडी सेल्स एंड योर माइंड टू। इतनी ताकत है उसमें, और उसी ताकत का एहसास मैं आपको अपनी कहानी के द्वारा बताना चाहता हूँ। Fighting terrorists is not difficult. Again, I'm telling you, it will cause you physical injury. आपको गोली की चोट फिजिकल इंजरी देगी, बट वो जो कैंसर का प्रकोप था, वो आपको क्या दे रहा है? मेंटल एगनी दे रहा है, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है। दैट इज वॉट यू हैव टू ओवरकम। फिजिकली तो इफ यू आर डन एंड डस्टेड, यू आर स्टिल नॉट आउट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यू मे लूज योर बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन, बट उससे आपकी जीत या हार निश्चित नहीं होगी। जिस दिन आपने मान लिया कि मेरी हार हो गई है, उस दिन आप हारते हैं। इसलिए नो अमाउंट ऑफ सैडनेस, नो अमाउंट ऑफ फेलियर्स इज एक्चुअली द कॉज ऑफ योर फेलियर। जिस दिन आपने सोच लिया, उस दिन से पतन शुरू हो जाता है। हैव यू सीन सच heavy muscular bodybuilders? They also undergo suicide cases, they also go through depression. क्यों? if physically they are so strong, फिर तो किसी को नहीं होना चाहिए। Correct? So it is the mental toughness which is more important. So that is my advice number 2 to you. Please be mentally awake and mentally tough. Physical क्या है? आज मैं मोटा हूं, कल मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं, दैट इज ऑल विद इन अस। पर जनरली हम क्लास में एक दूसरे को हमेशा चिढ़ाते थे, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, लंबा है। ये सब बदलाव, दीज आर ऑल टेम्पररी फेजेस। यू कैन ऑलवेज मेक योर बॉडी। अब तुम्हारे एलुमनीज आते होंगे, या तुम खुद को देखोगे, सी आफ्टर 10 years what you are today and what you will be after 10 years, there will be huge difference. You'll get mature. That mental faculty has to be slowly and slowly built up. वो बहुत जरूरी है। फिजिकली आप अपने में बदलाव ला सकते हो कभी भी, जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि आज से मुझे सिक्स पैक बनानी है या फैमिली पैक बनाना है, बोथ कैन बी डन। चॉइस आपके ऊपर। चॉइस टू स्माइल आपके ऊपर। चॉइस टू फील डिफीटेड हम सबके अंदर। नो वन कैन एनफोर्स
आपको कोई पकड़ के नहीं बोलेगा कि हार जाओ, तब भी आप स्ट्रगल करोगे। सो प्लीज बी मेंटली अवेक, उसकी स्ट्रेंथनिंग में आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, एंड थर्ड, हाउ मच टाइम डू यू वांट? एंड thirdly, just to sum it up, जब मुझे कैंसर हुआ था 2018 में, इट वाज रियली हार्ड, बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए भी हुआ, क्यों हो रहा है? हम पहले सोचते हैं, कोई बुरी चीज होती है हम अक्सर पूछते हैं वाई मी। अच्छी चीज होती है तो हम में से कोई नहीं सोचता होगा कि वाई मी। पर बुरा जब भी होता है हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ भगवान क्यों ये कर रहे हो, क्यों जाती कर रहे हो। पर जो हो रहा है, इफ यू कैन टेक दैट इन योर स्ट्राइड, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दी पावर ऑफ इक्वानिमिटी, अगर आप उसको सद्भावना से, सेम भावना से हर एक्टिविटी को ले सकते हो, आपको विचलित नहीं करना चाहिए, ना आपकी सक्सेस और ना आपके फेलियर्स, बट यू शुड बी अवेयर वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू हैव टू गो। शिप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सी में यू कांट सी एनीथिंग, चारों तरफ एक जैसा लगता है जब पानी होता है। देर आर डेज, एक हफ्ता निकल जाता है जब दूसरा जहाज भी नहीं दिखाई देता। दैट इज द वास्टनेस ऑफ ओशन। एंड उस परिस्थिति में अगर हमें नहीं पता है कि हम कहाँ हैं, तो क्या हम कहीं जा सकते हैं? इट्स समथिंग लाइक आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए, 4 बार घुमा दिया जाए और फिर बोला जाए कि प्लीज गो ईस्ट और वेस्ट, कैन यू? सो नोइंग वंस ओन पोजिशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। हम सबके रोल अलग है। आप यहाँ पे बैचमेट्स हो, क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो सकता है दुश्मन भी हो, कॉम्पिटिटर्स हो। यहाँ से घर जाते हो, आपका रोल क्या हो जाता है? यू विल बी सन, यू विल बी ब्रदर, यू विल बी सिस्टर्स इन योर हाउसेस। मिक्स फैमिलीज में, ज्वाइंट फैमिलीज में जाते हो, वहां पे और रिलेशंस आ जाते हैं। सो एट ऑल टाइम्स यू हैव टू बिहेव, और वी हैव टू बिहेव व्हाट वी आर। हमारा रोल क्या है? इट इज अ चेंजिंग रोल। बड़े हो गए और बहुत सारे रोल्स आएंगे। सो एट ऑल टाइम्स यू शुड नो वेयर यू स्टैंड। इफ यू नो वेयर यू आर, यू कैन ऑलवेज चार्ट योर कोर्स कि मुझे इस दिशा में जाना। सो सिचुएशनल अवेयरनेस जो होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ऑलवेज अवेयर मैं कहां पे हूं, आप अगला कदम ले सकते हो। सीढ़ी के एज में खड़े हो, रूफ के एज में खड़े हो, अगर आपको पता है कहां जाना है, तो आप सेफ्टी से वापस आ सकते हो। नहीं पता है तो आप किसी भी दिशा में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, what role you're playing, where you stand, and accordingly be positive in your mindset. If that you can maintain, the whole world is in your feet. You can fly as high as you wish. So coming back to cancer, तो जिस दिन मुझे बोला गया डॉक्टर विल नेवर से किसी भी पेशेंट को कि आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अनलेस इट इज सर्टिफाइड बाय द हिस्टोपैथ। जब तक कि पैथोलॉजिस्ट ये नहीं बोलता टेस्ट करने के पश्चात कि ये कैंसरस है, ट्यूमरस है, नो डॉक्टर विल एवर टेल यू। अगेन फॉर द वेरी सेम रीजन, डर की वजह से इंसान कोलैप्स हो सकता है। आप किसी को अगर चलते फिरते ही बोल दो ना, मैं बोलूंगा आपको, आप मुझे बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन ए डॉक्टर सेज, दैट इज क्रेडिबल न्यूज। जब वो बोलेगा तो इंसान अक्सर घबरा जाता है, अक्सर बेहोश हो जाता है, अक्सर प्राण भी पखेरु हो जाता है। ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। सो जब भी उन्होंने न्यूज दिया, सिंस ही हैड ऑपरेटेड मी 2-3 times, तो ही कुड टेक द लिबर्टी एंड ही टोल्ड मी कि तुम्हें किडनी कैंसर है। आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द रिपरकशन ऑफ इट। तो बोला ठीक है, लेफ्ट किडनी में था, तो बोला लेफ्ट किडनी अगर मेलिग्नेंट है तो भी काटना इज बेटर, नहीं है तो भी काटना इज गुड। आई सेड इट्स ओके फाइन, राइट लंग नहीं है, लेफ्ट किडनी नहीं, आई कैन स्टैंड स्ट्रेट। बोलना बहुत आसान था, बट उसके पश्चात जो 2 रातें बीती, इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट just to think about the cancer, the fear of cancer, that was killing me. उससे बाहर निकलने का एक बहुत सुंदर तरीका अनायास ही आया। I will say it and I keep telling every place wherever I go, please try and imbibe it. It's such a simple thing, but such a life-changing thing. That night, after 2 nights of struggle and various negative thoughts, positive तो फिर भी नहीं आ पाते, negative thoughts, I forced myself to smile, a fake smile. दर्द था, डर था, बट मैंने सोचा चलो एक स्माइल करके दे। स्माइल वाज सच अ वंडरफुल थिंग। इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेन टू कीप दैट स्माइल ऑन द फेस, बट आफ्टर एन आवर और सो, वो जो फेक स्माइल थी,
it became a smile. And what wonderful thing it did was it rejuvenated my entire body, my mind, that okay, all is well, सब ठीक हो जाएगा. You have to just go with time. कोई वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी भी. I keep telling ECG मशीन देखा है सभी ने? कैसा रहता है उसका? How is the wavelength? Sinusoidal? साइन कर्व के जैसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन. जब तक अप एंड डाउन है, कुछ ऊपर हो सकते हैं, कुछ नीचे हो सकते हैं, स्टिल ओके. बट जिस दिन फ्लैट हो गया, लाइफ इज गॉन. करेक्ट? तो जिंदगी में भी उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे. टू से नहीं आएंगे, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अभी यहाँ पे बैठे बैठे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं जग के सुन तो लूं. दैट इटसेल्फ इज अ बिग टास्क, बट दैट विल आल्सो पास. मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, नंबर आएंगे, नहीं आएंगे, वो वक्त भी जाएगा. So every time will pass. What you have to do is make yourself stronger with every passing time. Everything is temporary. You are permanent जब तक आप हो. अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ. That is more important. So उस एक fake smile ने, after my second day, cancer was behind me. At least mentally I had won. उसके बाद तो जो ऑपरेशन होने थे ऑपरेशन हुए, एवरीथिंग हैपेंड, बट दैट वाज नॉट अ फियर अगेन. एंड दैट इज अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट रादर देन एडवाइस. इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, प्लीज स्माइल. लेट मी सी हाउ मेनी आर स्माइलिंग. ऐसा नहीं जब टीचर डांट रही हो तब तुम स्माइल करो, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट इट इज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू टू इट. कि उसको श्रृंगार बोलते हैं. स्माइल इज द सिंपलेस्ट आभूषण जो आप पहन सकते हो, हर कोई पहन सकता है. और आप अगर स्माइल करते हो अपने दोस्त के साथ, he will or she will be compelled to give you a return smile. That is the power of smile. It unarms. अगर मेरे अंदर कुछ दूसरी भावना भी है, आप स्माइल करके मुझसे बात करोगे, I will be forced to be good to you. This is the power of smile. So please take it back home, especially when you are down and dusted, when you think nothing can happen, just try and get the smile on your face. It will do miracle. It has done to me, and I'm very sure it will do to every one of us. Okay? कितना बोर हुए? यही ज्ञान तो हर जगह सुनते रहते हो. मैं भी आके वही सुना रहा हूँ, बस एक यूनिफॉर्म अलग पहन के आपको सुना रहा हूँ. सो लाइफ इन फॉर्ज इज एक्चुअली अमेजिंग. मैं हर जगह जाके फिर यही बोलता हूँ, इट इज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू. ये नहीं है कि बाकी लोग काम नहीं करते. पेट्रियोटिक हर कोई, एवरी वन ऑफ इज पेट्रियोटिक. इट्स जस्ट दैट ये भी नहीं मैं कहूंगा कि वी आर मोर देन यू. नो, आप जहां भी रहो, एवरी वन ऑफ इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस नेशन. I keep telling, अगर आप फिजिकली फिट हो, you are contributing to the nation in a great way. अगर आप एजुकेटेड हो, अगेन यू आर contributing to the nation. बस नहीं तो कल पंख पसार के आप देश विदेश में घूमोगे. You will fly, you will get jobs, you will be creating history. जहां भी आप जाओगे, जहां भी आपको जॉब मिले. जिंदगी एक पजल है, हर एक के लिए बनी हुई है. अगर आप जिसको 60% आया, वो सोचता है कि नहीं मेरे लिए जिंदगी नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं रखा, गलत है. Every one of us has got a space in this universe. We have to be positive and we have to just keep working towards it. And जब 10 साल बाद सोचोगे, probably you will realize it. Just keep working, dream hard, work hard. लगे रहो, be positive. किसी को खींच के आगे नहीं बढ़ना, किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना. अगर आप साथ में लेके किसी को जीत सकते हो, वो सबसे बड़ी जीत हो. But if you think by kicking somebody aside and I win the race, you have lost the life ka lesson. There is no victory which you can enjoy if you're alone. जब आप कोई भी चीज जीतते हो या क्लास में फर्स्ट आते हो, हाउ डू यू थिंक? यू लाइक टू शेयर समथिंग टू समबडी. जब भी आपको कोई विक्ट्री मिलती है, आप ढूंढते हो ना, कोई तो मिले कि मैं शेयर कर सकूं. यस और नो? यस और नो? So that is the beauty. Once you share, it multiplies. It gives you more joy. It gives you more confidence. It gives you more inspiration to work harder. So please share. And दूसरी चीज, please ask for help. आज की दुनिया में with this mobile कर लो दुनिया मुट्ठी में, we have all become so individually.
सब कुछ आज ही चाहिए, अभी चाहिए, एंड जो भी आपको चाहिए आपको गूगल बता देता है, आपका मेटा बता देता है, आपका फोन बता देता है. So the urge to ask the neighbor or the next person to the left or right is vanishing. हम सोचते हैं वर्चुअली मेरे पास 7,000 दोस्त हैं, 10,000 दोस्त हैं, they will come and help you when the need arises. जब फिजिकली एंड मेंटली डाउन होते हैं, ये वर्चुअल फ्रेंड्स नहीं काम आएंगे. काम आएंगे आपके दोस्त, आप लोग आपस में. तो व्हाट्सएप का वो एडवांटेज जरूर है कि आप जो नेटवर्क आज बनाओगे ये आपके साथ जिंदगी भर चलेगा. मेक द बेस्ट आउट ऑफ. द टेक्नोलॉजी हैज गॉट प्रोज एंड कॉन्स. You have the choice to extract the best out of it. Okay? या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कुछ समझ में आ गया है, you don't know. चलो, I'll close because I can keep talking. I love being with kids. The only thing is, एक बार Einstein, many speakers have said, can you buy time? So your class 9th and 11th, I consider this is the, जब आप क्लास में बैठते हो अपने आप को दादा समझते हो, टॉप क्लास में बैठे हो, 9th 11th, you're the top of the school chain, I'll say. I mean, teachers obviously will not talk on that, but can you buy time? Think, यही चीज मैं आपसे 10 साल बाद अगर पूछूंगा, you will say yes. Why? उसका मैं एक छोटा सा just with two statements. Even today, when I meet a classmate, I get transported to my class 11th, 12th days. जब आप माँ बाप के पास पहुंचते हो, we get transported to a child status. We generally start behaving like a child. That is transporting you back to the time. Physically, you may be in 2024, or if I'm talking about 20 years hence, you might be in 2044, but when you meet your classmates, you'll start talking from where you had left, maybe class 11th onwards. 11th में स्कूल में हमने ये किया था, ऐसा किया था, इस टीचर ने ऐसा कहा था, दोस्त ने ऐसा किया. So you're reliving all your moments right since 2023, 24 till 2044. That is the concept of buying time. So your friends, your families, they can buy time for you. It is not a physical status or physical statement that we can't buy time. Of course not. But यही चीजें जब आपको याद आएंगी, आप खुश होगे, प्रफुल्लित होके उठोगे. You'll dance to all these thoughts and things you have done in the school. That is buying time. And इसलिए I keep telling, networking with your friends and families would be the greatest asset you can always carry forward. They'll always be standing with you wherever you are, good, bad, ugly. So invest in this networking. All the best for your next two boards. जो 9th में उनको 10th के लिए, जो 11th में 12th के लिए. And when you pass out of the school, this portal, you'll always crave to come back to school. अभी लग रहा हो कैसे मैं बाहर भागूं, कैसे मैं बाहर निकलूं, but this is the best time you're having. अभी आपकी एस्पिरेशंस होंगी, मुझे बड़ा बनना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब करना है. जब वो करोगे लगेगा काश स्कूल में ही होता. So much of freedom, at least mentally. Accountability कितनी है? केवल पढ़ाई की. Just be good to yourself. पढ़ाई करो. That is all is expected. So the whole world is open to you. You can whichever way. I can't, because I've already crossed 30 years. I can't come back and refly. But today you're in such a place that you can fly anywhere, whichever country you wish to, whichever job you wish to. So that is the field which is open. Maximize that. Take good lessons from your teachers, from your peers, from your counselors, and make a good choice so that you don't have to spend next 30 years. So that is the importance where you stand today. What you take, the decision you take in the next 2 years, you will live with that decision for probably next 40, 30, 40 years. So please understand the importance where you stand today. So all the best, and God bless you all in your academics and future. Be happy. That's all I can give. Much, sir. It was a wonderful journey, and actually, मतलब like मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे जब आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे.
So it was giving me goosebumps, and many of us students have also experienced the same, I guess. Now it's time for question answer. So, as you are, the forum is open. You can ask questions to sir. If during the story you would have, thought of asking something, you can raise your hands. We'll bring the mic to you. You don't have any questions? जनरली दो कारण होते हैं when you don't ask questions. एक तो है कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा है let's get out of this room first. जितना जल्दी हो सके निकल जाएंगे यहाँ से. शर्म आती है. That's a very wonderful thing. You're absolutely right. I forgot to tell you. Okay, I'll tell you one more thing. Okay, I'll make you at least. Even I was a backbencher, and generally backbenchers के साथ problem क्या होती है? आगे क्या हो रहा है हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं backbenchers. कितने backbenchers? Not now, but otherwise in your class. यहाँ पे तो शायद हाइट की वजह से पीछे हो जाते हैं. Various reasons of being the backbenchers. But generally हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं प्रश्न पूछूंगा मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? We start living for others. हम सबकी वही बात है. 20 साल पहले मैं 12th में था तब भी यही सोचता था और आज देखो आज भी वही. तो मतलब nothing has changed much. The students do change. School वही रहा है. Thought process generally वही रहता है. Yeah. You come back. Yeah, please. Wonderful. And as I told you, ECG wala curve, life cannot be same throughout. इनमें ही इतने बदलाव आ जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या क्यों आज हो रहा है, क्या किया आज मैंने जिसकी वजह से गलती हुई. The only thing is just get a smile back to your face. Be clear in your heart that I have not done anybody harm. अगर इंटेंट आपका करेक्ट है, रिजल्ट में नॉट बी इन योर फेवर. एग्री, टेक इट, लिव इट एंड आगे बढ़ो. जब तक आपका इंटेंट सही है, आपने किसी को हार्म नहीं किया हुआ है, अगेन इट्स जस्ट माय टेक, रिजल्ट वाज नॉट इन माय फेवर, इट्स ओके. Life will give you another chance. We should be just happy that every day morning we are getting up. There are millions of people who don't even get up in the morning. उनको सुबह का सूर्योदय दिखाई नहीं देता है. So we should feel privileged to be alive. And having been declared dead twice, I can say with a lot of certainty, I am living on lease. And every one of us is actually living on lease. क्या किसी को पता है कि how many years they will live? Any one of us. Birth today, yes. With a cesarean, we can ascertain कि आज मैं इस दिन अपने बच्चे को पैदा करूंगा. But death is very uncertain. Which is the most certain thing. जो आया हो तो जाएगा. Most certain. But all you have to do, or all of us has to do, or what I do is take it in this stride. रुकना नहीं, कदम अपने बढ़ाते जाओ, एक्टिविटीज अपने करते जाओ. आज बुरा हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, इट्स ओके. डिड यू डू योर बेस्ट? इफ यू हैव, प्लीज गो. इफ नॉट, रीस्टार्ट. फिर अच्छे से करो और आगे. ओके. How to overcome fear of anger? How to? Fear of anger. I still could not. That how to overcome fear of anger? Fear of? Wow. Fear of anger, na? Anger issues. Anger issues. You're in class? 9. Great. Chalo, very nice. Very nice. Please sit. So wonderful questions. And these are very natural questions to come. Please sit down. The senses, they are like horses. They'll always take you to different directions. They get very easily manipulated by the situation. Basic thing is, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता. ऐसा नहीं है कि इस धरती में कोई ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता. वक्त के हिसाब, गतिविधि के हिसाब,
एट सम पॉइंट इन टाइम बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी हम जनरली ब्लेम किसी और को करते हैं, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। द चॉइस ऑफ बीइंग एंग्री इज विद अस, द चॉइस ऑफ बीइंग हैप्पी इज विद अस। वी शुड बी ब्लेमिंग। जब तक हम किसी और को ब्लेम करते रहेंगे वी कैन नॉट रेक्टिफाई अस। द डे वी एक्सेप्ट द गलती मेरे मन की उपज है, मैं उसको सींचना बंद करूंगा, आपका एंगर इश्यू सॉल्व हो जाएगा। आई नॉट से सॉल्व हो जाएगा, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस। इस एक्टिविटी से मुझे गुस्सा आता है, नेक्स्ट टाइम योर माइंड शुड स्टार्ट प्लेइंग। इस एक्टिविटी से मुझे गुस्सा आता है, लेट मी टेक 2 स्टेप्स बैक। जब भी वो एक्टिविटी आ रही होती है यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, इससे मुझे गुस्सा आता है, मुझे नहीं होना है। दैट इज वन ऑफ द वे आई डील विद इट। इफ आई नो अ पर्टिकुलर थिंग, सपोज लेट आना किसी भी जगह पे मुझे नहीं अच्छा लगता है, आई कैन ट्रेन माई सेल्फ। ना पहुंचना अच्छा लगता है, अगर कोई मीटिंग बुलाई है वहां लेट कोई आता है वो भी अच्छा नहीं लगता है। बोथ वेज आई कैन ट्रेन माई सेल्फ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग एंग्री? अगर आपका इंटेंशन सही है, as you keep growing up in life, you'll have that maturity and the information available to you. आप वो डिसाइड कर सकते हो। अगर इंटेंशन सही था, किसी वजह से there's so much of traffic, you didn't intend coming late. If you can get to know the intention, as a boss, you can always forgive. But as a person who's in charge, or probably if you are coming late, you should be clear in your mind that your intention was correct, but because of circumstances, it's not. So, to cut it short, if you know what makes you angry, just take a list out of it. एक list बनाना शुरू करो, and you'll see within a page or two, everything will finish off. I can guarantee you, you will not be able to write 10 incidents more than a page. What makes you angry? एक बार लिख के देखना, and एक बार लिख लोगे, then you can overcome. Mostly क्या होता है, we are not able to identify what are your triggers for making you angry, for making you XYZ. If you can get the triggers, you can work on the triggers. 3 लंबी सांस लो, आपका एंगर इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। इट हैज गॉट लॉट ऑफ प्रूफ विद इट। ठीक है, डोंट रिएक्ट। गुस्सा आता भी है, आप रिएक्ट मत करो। यू हैव टू एक्ट। एक्ट इज व्हाट? यू टेक इनपुट्स एंड देन एक्ट। रिएक्शन इज व्हाट? विदाउट इनपुट्स यू एक्ट। So stop reacting. Moment तुमको लगता है गुस्सा, just take a step back in your mind, not physically also. Take 3 long breaths and then put up a solution. It will work. Mind is the best. Please sit down. Wonderful question. Mind, मतलब सदियां बीत गई हैं, इतने ऋषि मुनि चले गए हैं इसी मन को कंट्रोल करते करते। अगर इतना आसान होता तो जिंदगी ही कुछ और होती, जिंदगी का प्रारूप ही कुछ और होता। इट्स अ चैलेंज एंड इट इज अ डेली चैलेंज। ये सबके साथ होता है बेटा। एंड इफ आप लोग जिस स्टेज में हो यहाँ पे फिर भी कम है। अक्सर आप सोचते होगे चलो ठीक है आज मुझे सिलेबस खत्म करना है, बट थोड़ा सा व्हाट्सएप, थोड़ी सी मूवीज, थोड़ी सी चैट, थोड़ा सी कॉल, सब कुछ डिस्ट्रैक्ट होके सिलेबस वहीं का वहीं रह जाता है, बाकी चीजें हो जाती। माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इट ग्रोज विद व्हाट वी फील। इसको आप जो फीड करोगे, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर आज दिमाग ने बोला या माइंड ने बोला कि मुझे ये चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसको आइसक्रीम खिला दूंगा तो मान जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वन क्रेविंग लीड्स टू अनदर क्रेविंग। So again, you have to just, if you start thinking mind is a separate entity within yourself, you should be able to control it. अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ये चाहिए, नहीं मैं नहीं दूंगा। You have the power to control those thoughts. Mind it is all senses which is feeding your mind and it is reacting to that. आप उसको जो दिखाओगे वो और चाहने की इच्छा रखता है। And if you can cut it down to size by again inputs, what is good for you, what is bad for you. Every one of us knows. ड्रेस में कोई दाग लगा रहता है, क्या आपको पता नहीं रहता? आज आप कंघी करके नहीं आए, क्या आपको पता नहीं रहता?
या आज आप नहा के नहीं आए, क्या आपको पता नहीं रहता? हर इंसान को अपनी कमजोरी या अपना जो नेगेटिव है वो छुपा के रखना सबको आता है। तो देखना आपको है, सिंस यू आर द ओनली बेस्ट पर्सन टू नो व्हाट इज फॉल्टिंग इन यू टुडे। दूसरा शायद ध्यान भी ना दे कि आज मैं शू पॉलिश करके नहीं आया, बट खुद को गिल्टी होता है कि आज मैंने पॉलिश नहीं किया, टीचर पकड़ेगी, दोस्त क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वी आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। आपको अपने इंटेंट को क्लियर रखना है, अपने आप को सुदृढ़ करना है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स। एंड जिस दिन आपसे गलती हो रही होगी, आपको पता है। सो कंट्रोलिंग द माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, very difficult, but you can manage it. And managing is by knowing what is good or bad and accordingly feeding it. आप उसको खाना ही मत दो जिसको, जिसकी भूख है उसको, धीरे धीरे आपके कंट्रोल में रहेगा। एंड वंस यू कैन कंट्रोल द माइंड, यू आर अ परफेक्ट सेज। लिस्ट डाउन करो। यस, कम ऑन बेटा। उसका हाथ क्यों उठा रही हो आप? प्लीज, या प्लीज बोलो। आई कैन हियर यू। My name is Sakshi, and so as you mentioned that our thoughts carries a great significance in our lives. And so one of your goal was to actually kill or beat a terrorist. And so you did it also. But the terrorist who was killed also came with the same intention to kill or beat a terrorist. So why do you think that your thought was so dominant and why not yours? I really cannot say what his thought was. I can only react to his action. उसने क्या सोचा तो मुझे नहीं पता। हो सकता है एज ए टेररिस्ट, लिसन, जब टेररिस्ट लोग जाते हैं टेररिस्ट बनने के लिए, उनसे भी पूछा क्यों जाते हैं बनने के लिए। दे नीड मनी फॉर देयर हाउस होल्ड टू रन, दे नीड सम काइंड ऑफ फेम that they have worked for the religion or ABC, or they have worked for the tanzeem in which they have got enrolled. I really cannot say about what they thought in their mind, but उन्होंने ये चीजें जरूर सोची होंगी। That is how they become terrorists. कि मुझे अपनी तंजीम के, उनको देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उनके लिए उनकी तंजीम, अगर मैं ये करूंगा मर भी गया कोई बात नहीं, मेरे परिवार को खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हो सकता है उसकी थॉट केवल इतनी रही हो। He did all of this. So probably he achieved 100%. I achieved 120% with the injury as well. So we really can't get into others' head to know what he was actually thinking or dreaming, but we can certainly do with ourselves. So instead of thinking why with him, think why with me, or how it can be made better. If every one of us is a wonderful individual, the society itself will become a very wonderful place to be in. And again, not alone. We have to collectively move. कितने बिस्किट्स हैं? कंप्यूटर बिस्किट्स, कंप्यूटर जीनियस। अच्छा ठीक है, इंटरनेट कितने लोग यूज करते हो? लिनक्स कितने लोग यूज करते हो? लिनक्स नहीं, उबुंटू सॉफ्टवेयर, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज इट, वंडरफुल, ठीक है। ओके, सो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आई जस्ट केम अक्रॉस, ओबनाटो, OBANATO, प्लीज गो एंड सर्च। It's such a wonderful concept. It comes basically from the African continent, which means I exist because we exist. अगर इंडिविजुअली हम कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग, ये कपड़े, ये किताब, टीचर्स, हर इंसान का योगदान रहता है इस संसार को बनाने में और हमें कुछ बनाने में। अगर मैं सोचूं मैं अकेले खुद ही अपने कपड़े बनाऊंगा, अपनी किताब पढ़ूंगा, अपनी किताब बनाऊंगा, तो क्या हम कुछ बन सकते हैं? सो वी एग्जिस्ट एज अ सोसाइटी, एज अ वर्ल्ड। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ नेटवर्किंग। अकेले हम कुछ नहीं। ओके, एनीबॉडी एल्स? या प्लीज। Hi. So the one thing is that I also have that I have a mindset that more much, but more than people or the society as well as a person, which our distract. वेरी नेचुरल थिंग एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हम सबके साथ यही कश्मकश रहती है।
इट्स वेरी नेचुरल थिंग, प्लीज सिट डाउन। इट्स वेरी नेचुरल थिंग कि हम खुद को ही जज करने लगते हैं। एंड जनरली जब हम अपने आप को जज करते हैं, सपनों में क्या होता है, जब आप चेस कर रहे होते हो आप भाग भी नहीं पाते, अक्सर ऐसा ही होता है कि आप किसी को चेस कर रहे हो बट आप खुद गिरते चले जा रहे हैं। चोट सबसे ज्यादा हमें ही लगती है अपने सपनों में। एंड यही ट्रांसलेशन आ जाता है, वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स, वी बिकम सो परफेक्शनिस्ट that we start judging ourselves in the negative sense. I keep telling like how many 99% plus प्रीवियस क्लास में किसके 99% प्लस आए थे? ओके लेट मी ब्रैकेट इट, 90 to 100% वाले कितने थे? वेरी गुड, फिर तुम्हारा हाथ उठा रही है। ओके, सो we have brackets, I'll just put it 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, करेक्ट? अगर ये हमारे मार्क्स हैं, which means if I am 60% and she is 100%, I am already 40% behind her. But हर इंसान अलग है। If I start comparing myself with her, it is wrong. I will demean myself. Everyone has been made with a purpose. Class में बहुत ही लाजमी है, in your age, with your maturity, to think this way is perfectly all right. कि why can't I get 100%? हम सबकी एक capacity होती है, and we have to work towards it. If I am a 60% guy, I need to work 100% of my 60%. Then I'm doing justice to the society. Then I'm doing justice to myself. So be that 100% in whatever you are, जो भी आपकी capacity. Aim high. Don't demean yourself if you're not getting 100%. Again, intention, if it is clear, you may fall to 50% or 60%. Be 100% of that 50, 60%. That will give you confidence. I've tried my best. नहीं मिला कोई बात नहीं. I'll continue to try. But the thought should not lower your self-esteem. Why I didn't get 100%. Every one of us is different. So please stop comparing with each other. Compete with each other. By all means till the last breath. But not by pushing him or her. By collectively pulling each other, if you reach on top, you will enjoy more. You'll have so many people to share your achievements. Okay? Somebody else, yeah, please. Okay, you. What are the steps? Great, I'll sum it up with that. Okay? Yeah, your question. शब्दों का खेल है। ठीक है, योर इंटरेस्ट विल जनरली जनरेट पैशन। आप जो कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, if the interest is continued over a certain period of time, delta t, that will get converted to your passion. If it is temporary in nature, जो आया और गया, probably it will not convert into a passion. आप किसी चीज के बारे में जब ज्यादा सोचते हो, बार बार सोचते हो, that may convert into a passion until unless you get something better. Yes, ask the lady. Yes, come on. For Navy? Okay. As I told you, please sit down. I was an army cadet. I wanted to join army because I wanted to become a commando. And I wanted to become a commando because I wanted to kill terrorists. Okay, boys. What is your first toy? जो तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारा पहला खिलौना क्या था? You're sitting in the first, so I'll ask you. Okay. पहला खिलौना याद है? या पहला सोच क्या था, सपना क्या था कि मैं बड़े होके ये बनूंगा? Wonderful. ठीक है, but okay. So generally the first choice of boys जो हम देखते आ रहे हैं, I also have a son, is like a toy gun.
क्या बनना है? पायलट बनना है। क्या होता है कुछ नहीं पता, बट पायलट बनना है। ये अक्सर बच्चों का होता है, बहुत सारे बच्चों का यही ख्वाब सा हो जाता है कि मुझे पायलट बनना है। टॉय गन होती थी। आजकल की वीडियो गेम्स, इफ यू सी व्हाट आर द मेजर वीडियो गेम्स, ऑल ऑफ शूटिंग, जनरली मोस्टली आर ऑफ शूटिंग, रनिंग, इसी तरह के रहते हैं। So these are first choices which generate your interest, which converts it to passion. क्वेश्चन रह गया शायद। What was your question? Navy. Okay. So with that, I wanted to kill terrorists, become a commando, reverse order में join force, which I did. But क्योंकि parents ने बोला please join Navy, your brother is in Navy, I am in Navy, so we will meet often. तुम आर्मी में रहोगे, तुम्हारी छुट्टी अलग टाइम, हमारी छुट्टी अलग टाइम, so I joined Navy. मेरा ड्रीम क्या था? कमांडो बनना, जो कि नेवी में आके मैं कमांडो बना। ये नेवी की ड्रेस जो है, ये कमांडो की ड्रेस है। जब मैंने सोचा था तब नेवी में कमांडो नहीं होते, बट किस्मत ऐसी थी, मतलब आई एम जस्ट लकी टू बी एक्चुअली नरेटिंग दैट वे। या प्लीज। What was your influence? Throughout your journey, you said that you had to go through several operations. So, were you scared? And if yes, then how did you overcome that? अगर दुश्मन को दोस्त बना लोगे ना, तो फिर कोई दुश्मनी नहीं रह जाएगी। आई हैव स्टार्टेड लविंग हॉस्पिटल्स, हैविंग स्पेंड मोर देन 2 years इन हॉस्पिटल्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉस्पिटल जाना, तो डर कभी नहीं रहता। पर ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी चीज के लिए भी चले जाओ। बट यस, आई हैव स्टार्टेड लविंग हॉस्पिटल्स, सो दैट फियर इज नेवर देयर। आपको अपना रूम मिल जाता है, दिन भर आप अपना मोबाइल खेल सकते हो। यू जस्ट टू योरसेल्फ, यू हैव टू जस्ट कीप योरसेल्फ मेंटली sane in the hospital. So that is just on the lighter way, but yes, you know you have to go through it. There's no other option, and if you have to go through it, might as well enjoy and go through it. Okay? If it is inevitable, just enjoy it. Yeah, please. I believe that as you know, these 4 years are very important for our coming career. So, how to make a wise decision? Please, sir. Wonderful, inquisitive question. As a kid, I'll only request. Okay. Yes, young lady, please. I'll come back to your question. What are the priorities? Okay, great. When you're into it, again, I kept telling, फौज में इतनी ट्रेनिंग करवा देते हैं कि आप सोते हुए भी वो काम कर दोगे। So now coming into this operation, no thought comes into your mind. What you have been trained for, you're in a particular operation, in a situation, you just act to accomplish that situation. You have to just come over it. You will do everything about that. ना परिवार याद आता है, ना कंट्री याद आता है, for that matter, when you are into the operation. जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो, आपको कोई और ख्याल आता है कि मम्मी ने मुझे परसों ये बोला था, टीचर ने मुझे 10 बार होमवर्क दिया था, कुछ नहीं याद आता है। यू आर इनटू योर एग्जाम्स, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। और जब किसी क्वेश्चन में आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, तब थोड़ा सा मन यहाँ भटकता है, ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इतनी बार तो मैंने किया था। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। ऑपरेशंस आर, मिशंस आर जनरली लाइक दैट। कुछ याद नहीं आता, मिशन in front of you, you have to just win that. That is the most important thing. Yeah, please. Okay, I'll cover that. In case I don't, please remind me once again. Sorry, what was your question? I just forgot. Okay, so in today's world, now you see so many external agencies are there to feed you with information. एक तो YouTube हो गया, Google हो गया, plus you have teachers, you have counselors, you have talkers, they all keep coming and they all keep suggesting. In सबके views, and they are all your friends. No one is your enemy, correct? Your parents, everyone is in trying to basically favor you. What should be best, you should get more. So all the information is available to you. Then you know intrinsically what is your passion. You can choose from all these things. Information is always there, choice is always. Okay. Now coming to the last, फौज में कैसे ज्वाइन करना है या कुछ। Good afternoon. I am from that. I want to ask that. I want to ask that how to not get distracted by the world or to focus on your goal when the world is not working. Listen,
Very good question. I can only give you a very general answer. वर्ल्ड को नहीं पता कि अथर्व को क्या चाहिए. अथर्व has to generate that kind of imagination or dream or चाहत की जो ख्वाहिश है वो आपको generate करना है. Once you generate that, then the whole world will try and make it happen. In world, I think friends that Everybody, living, even non-living, take them also. Every कल को तुम पत्थर से जाके गिर के चोट लग गई, उसका भी एक रोल है. ठीक है, this age you will not understand. Probably with maturity, every individual, we are all a puzzle of this entire world. और हम सब किसी ना किसी puzzle के हिस्से हैं, कहीं ना कहीं पक्का फिट हो. So never ever underestimate yourself. If not this puzzle, you're probably made for a different puzzle. So have that self-confidence and self-esteem. I am for this world. I can make the difference, and I will make the difference. Live with that passion. ठीक है? And earlier, students were shying away to ask questions. Now they are flooding. A lot of questions. We are also getting some questions online, sir. Okay. So we'll come back to can you. we- First, we'll try and quench Yes, that. let's take some questions online. This question is from Shagwa Nawab, RKL and Karolbag 5. She's asking, how can we get mentally strong as a girl? Girls are my superpower of girls. I started my address with that for very many reasons. अच्छा, आप सब ने घर में मम्मियों को देखा होगा. टीचर्स को अभी एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज टीचर्स हैव अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर. और आपने ये भी देखा होगा जनरली मम्मियां क्या करती हैं, अगर जैम का बॉटल नहीं खुल रहा तो किसके पास लेके जाती हैं? नॉट दैट कि शी कांट ओपन. There's so many small little things. She's just keeping the house together. That is the art of keeping the home alive. यहाँ टीचर्स लोग भी यहाँ भी काम करके घर जाके क्या करेंगी, फिर भी घर का काम इन्हीं के ऊपर आता. आपकी भी मम्मियां काम करती होंगी कहीं बाहर, बट जब घर में आती हैं, who takes charge of the house? Who takes charge of the house? Generally mother, 99%. 1% I'll keep it as an impression कि पापा लोग करते होंगे. I am also a papa, but generally mothers take the call. ठीक है, it's a wonderful thing. Now जब ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, the mothers make their husbands realize और कि they are stronger. घर में कॉकरोच आता है, सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है? हाँ, घर में लिजर्ड मिलती है, कौन सबसे ज्यादा चिल्लाता है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई डोंट डिनाई दैट. बट जब बड़ी मुसीबतें आती हैं, the girls are the strongest. Again from my experience, जब मुझे गोली लगी थी एंड आधी चीजें बताई क्योंकि तब फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होता था. My father was the first to break down. जब वहां से खबर आई कि आधा पोर्शन नीचे का गायब है, या लेफ्ट पैरालाइज हो गया, या राइट पैरालाइज हो गया, with all contorted news when it started coming, my father was the first one to faint. My mother also, but she stood her ground. My wife was the one who kept fighting. कि ठीक होगा. And if I am surviving today, courtesy actually mostly to the wife. Because your network, your family, that has to be strong to get you out of any adversity. So I don't know whether I've answered her, but yes, as a girl, you are part of girls. You have immense potential. I can prove you scientifically also why they are more stronger. We are not going into the physical part. I have already proven to you that physical fitness is different, mental fitness is totally different. I can be physically superhuman, but if I'm not mentally good, this will not help me. So girls are the best. कोई चेयर भी नहीं कर रहा अभी. So there is one more question, just by Jyoti GG Triple S Vasundhara Enclave. Sir, she wanted to know about your experience while training for Navy. Okay. So Marine Commandos, please go and search in your YouTube. It's pretty interesting facts you'll get to know. And Marine Commandos, one of the longest and physically arduous course. मतलब बहुत 2 साल का लगभग कोर्स हो जाता है. इस 2 साल में हमें बीमार होने की अनुमति नहीं है. If we fall ill, we are chucked out of the course. So that is the requirement. So 2 साल की
training में every day we have to fire, every day we have to run more than 5 kilometers with a weight pack of almost 5 to 6 kilometers, and swimming, spinning, underwater swimming with hands and legs tied. You have to survive in a swimming pool and in the sea. फिर उसके सी की ट्रेनिंग अलग होती है, बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग होती है. We jump from almost 10,000 feet from the air, underwater more than 180, 200 feet. So all kinds of training to make you use whatever resource you get at the point of your objectives. So that is what a commando is generally. He can make use of whatever is available to meet his objective. So training is very long, very hard. You have to be patient and you have to be mentally fit. Thank you so much, sir. This interaction is really inspiring. Questions are pouring in, I know, but we have the time constraint. So it's time. Actually, this interaction is so captivating and so interesting that students wanting to know more and more. I can see their hands are still raising, but we are, short of time. So it's time to. Thank you, ma'am. And just to end up, I have two more questions to answer. One is how to join armed forces. So even for the girls now, after class 12, you can join National Defense Academy. So that's a wonderful opening. After 12th science stream, you can join National Defense Academy. That's the fastest way to get in. If not, do your graduation. Science is mostly preferred because the number of avenues with science as your subject, you have more number of avenues. As a pilot, and this for both girls and boys, no differentiation. So as a pilot, as an observer, as a combat diver, everything you can do. Everything is open. Literally 99% of the job avenues in the armed forces is open for both. So after graduation, you can again join through CDS, through OTA. So options are always open, and we are getting a lot of girls. In fact, in the sports field, all the medalists, we are also getting the medalists back into our services in the armed forces. Ritika Huda, the Asian Game medalist who went for Olympics, I don't know whether you're aware of it or not, she's joined Navy. So we have few kayakers and rowers, 5 girls we have taken in Navy, and boxers we have in Army. So avenues are open, choices for you to make. Now you will be actually spoiled with the choices. So that is all about armed forces, and websites are there. You all know. Just be physically fit. That is all is required in Forge. Your basic qualifications of I think so 60 or 70% that keeps changing, which you'll get in your recruitment newses. Otherwise, physically आप fit रहो, mentally आप strong रहो. That is all we need. फौज में हमें केवल followers चाहिए, thinkers नहीं चाहिए. We don't need scientists. Okay? कुछ समझे उसका मतलब? Because when you are working in numbers, if everyone starts applying his mind, it becomes difficult to achieve an objective. If an objective is given, it has to be just followed. Isliye a decision of an officer, he is so much accountable. A small wrong decision, many lives can actually go. So you have to be a little more careful. And therefore, training, 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 and training. आप सोचते हो कि फौज जब लड़ाई नहीं करी तो कर क्या रही? It is this training which we try and train ourselves mentally and physically for that one moment, if ever it arises. God forbid it doesn't. Even as a Fauji, I would wish कि ऐसी नौबत ना आए. But अगर आएगी तो वतन के बुलावे पर कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंचना हमारा कर्तव्य है, वो हम करेंगे. Okay? Any other thing? पर अभी जब मैं जय हिंद बोलूंगी तो आप सब अपना फुट के साथ सल्यूट करेंगे सर को, जैसे फौजी करते हैं. ठीक है? तो स्ट्रेट अटेंशन. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. So, Jai Hind. Please sit down. Please take your seats. You are not supposed to go. Flying